Hello everyone, welcome to Clean Slate Graffiti episode 20 and we are back, Siddhant and Thomas. Today we are just going to share experiences again. बोल भाई कुछ तो बोल एक्सपीरियंस शेयर होने और वही सेम सेटअप में और आज एयर हॉस्टेस की आवाज में इसलिए बोला क्योंकि 10 मिनट पहले मैंने टिकट बुक की है तो काफी ज्यादा एयर हॉस्टेस की आवाज एक्चुअली एयर हॉस्टेस ने कैप्टन की तरह तो बोला था मैं तभी हंसने लग गया था मैं जैसे वो कहता है ना और इसी रीजन के लिए मैंने टिकट भी बुक की है एंड dude it's actually pretty insane ticket pricing no there is some algorithm मैं बैठ के देखता हूँ you know you पहले 10 दिन में it's half the price then suddenly you book it's almost double the price क्या सोचते हैं पहले 10 दिन में ऐसे महीने के 10 दिन में पहले महीने के पहले 10 दिन no man for the first 30 days there is the search pricing is there and then suddenly it drops to like half 50%. Okay. And so it's kind of weird कि I mean इतना क्यों महंगा है? Reason क्या है? And why isn't there something to defend that to begin with? You know? नहीं ये तुम एयरलाइन इंडस्ट्री से बोलो भैया क्या सीन है? देख सबसे पहले तो मैं डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? एयरलाइन इंडस्ट्री से नहीं हूँ मैं सबसे पहले ठीक है just to clarify that something related to that हाँ something related to that मतलब but not anymore not हाँ I think in that case I can then tell since it's not anymore I can then tell कि back पहले for some of our viewers who probably don't know कि so yes I was earlier working as an aviation analyst. And for a company which is into aviation obviously so yeah anyway so no, that was a big brain movement मतलब इतना फिगर आउट कर सकते थे लोग इतना फिगर आउट कर सकते थे ना सर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ कहाँ पे बैंक में अरे चुप ये ओके नहीं मुश्किल था नहीं बट देख ये जो कॉस्ट जो होते हैं टिकट्स के वो ऑनेस्टली एयरलाइंस के हाथ में होते हैं ठीक है और एयरलाइंस के जो टिकट्स के प्राइसेस होते हैं दे डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर इज सबसे पहले तो सीजन क्या है ठीक है और आई थिंक दैट इज द ओनली फैक्टर इन्वॉल्व्ड नहीं हाउ मच प्रॉफिट यू कैन मेक आउट yeah I mean that is the only that is not the factor that is the mere objective of the whole pricing model right ठीक है वो तो कांस्टेंट है कि नहीं भाई धंधा तो चाहिए ना getting it okay तो maybe. हम तभी अपनी गाड़ी चलाएंगे ना अगर हमारे को प्रॉफिट होगा नहीं तो हम क्यों अपना जहाज उड़ाएं वो वाली बात है ठीक है in some way I mean it's also common knowledge that a lot of flights are going empty right during this pandemic era. They have been, yes. And any good competitor, I don't know about the airline industry, but even if they want to get the market share, wouldn't they lowball their prices? So that's a good question. They do lowball their prices. Having said that, जब situation इतनी जब मार्केट अभी सॉफ्ट चल रही है जैसे कहते हैं ना कि अभी सॉफ्ट चल रही है सॉफ्ट मार्केट है कि प्राइसेस गिरे हुए हैं. For that matter, forget the tickets, man. एक aircraft का price मैं तो example देता हूँ. There's an aircraft called Boeing 777. Okay, Boeing 777. It's a wide body aircraft. It's the longest twin jet aircraft. Longest. Longest. Are you sure? Longest. Wide body and then you say longest. Longest twin jet जिसके 2 engines हैं. Okay, cool. ठीक है. All right. So and it's a pretty sick aircraft. It has the most powerful engines in it. It's called GE90. तो मतलब वो literally GE90 चलता है तो हम geeks की मतलब हम हमारे को कुछ हो जाता है मतलब उसके आवाज GE19 is made by which company? General Electrics. जी हाँ. GE का ही है. Okay, cool. GE का ही है. तो GE90 है. Anyway, so coming to the point, तो So I was saying कि aircraft prices भी गिर गए हैं. This particular aircraft costs about $40 million. उसकी जब रीसेल होती है डिपेंड मतलब between $30 to $50 million based on उसकी age and everything ठीक है. जेट एयरवेज अभी जब ग्राउंड हुई थी तो जेट एयरवेज का एक 777 आई थिंक KLM has recently bought it और एरो मेक्सिको has recently bought it $8 million में. But okay, that is because the market is soft क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है मतलब the demand was less and the supply was more
Okay. Hence the prices go down, right? That was Demand is happening. less. क्योंकि Okay, cool. क्योंकि क्या हुआ कोविड में, उड़ रही नहीं है प्रॉफिट, मतलब देख, ओके आई टेल यू द वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल्स इन एविएशन इज, एक खड़ा हुआ एयरक्राफ्ट कभी इन मोस्ट ऑफ द केसेस a stationary aircraft or a parked aircraft actually ends up costing you more than a flying aircraft. True. I've ठीक है? heard that. Yeah, so a wide body like 777 standing doing nothing, like parked, it will always cost you more. तो और वो खरीद कोई सकता नहीं, क्योंकि खरीद के उड़ाने के लिए परमिशन तो है नहीं, सब कुछ तो बंद है एयर स्पेस। Okay, fair enough. तो उस तरह डिमांड ही नहीं है एयरक्राफ्ट खरीदने की, और सप्लाई बहुत मैसिव है। व्हाई? बिकॉज एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट निकालना चाह रही, क्योंकि वो उड़ा नहीं पा रहे, और क्योंकि कोई उड़ा नहीं पा रहा तो वो कोई खरीदना भी नहीं चाह रहा। गेटिंग इट नाउ? यू गेटिंग द डिफरेंस? Okay. तो my point True. was coming back to the tickets, तो even in, तो I mean it, yeah, coming back to the tickets, जो since तूने point बोला, तो सिर्फ टिकट्स के ही प्राइस गिरे नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के प्राइस गिरे हुए हैं। ऐसे में इनको कोई भी एक छोटा मौका मिलता है टू मिंट मनी, दे डोंट लाइक leave any stone unturned for that then. तो Maybe. I've also हाँ, heard this fact कि airline business is a very short margin business. oh very short But- margin man, So yeah, very then short you margin. shouldn't get into it नहीं if you don't have a lot of money. नहीं, that's why no, मैं खुद की एयरलाइन नहीं बनाना चाह रहा ना। नहीं, हम मैंने तेरे एयरलाइंस को नहीं बोला। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा, मैंने ओ मेरे तेरे को को नहीं बोला। इन जनरल कह रहा है, ओ इन जनरल कह रहा मैं जनरल बोल रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं बोल रहा। मतलब some people have managed to make their airlines profitable in a very short span of time. जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे विस्तारा को अब ऑलमोस्ट 8 साल हो गया इन द मार्केट, ठीक है? विस्तारा लिटरली 2020 या 19 में पहली बार जाके प्रॉफिटेबल हुआ था, पहली बार। तब तक लॉस में दिखा रहा था, हर साल लॉस में था विस्तारा, ठीक है? बट देर आर सम एयरलाइंस जो लिटरली अपने ऑपरेशंस कमेंस होने के 3 years बाद दे आर इन प्रॉफिट्स somehow. By somehow it's because their business model was good. So it's a very, like, I really suggest, for that matter, if people are interested, in India, Indigo is a very good airline to study a business case, okay? But Indigo, fair again, it has many things which fell in its favor. Jet Airways का crash होना, Air India की बेकार सर्विस होना, Go Air कभी हाँ, उठाना, true. तो Indigo in general भी मोनोपोली बन ही रहा था। Nothing तो against सीधा, them, they were if also you're doing just very सीधा good. साधा, then you're good enough. हाँ, but if you really want to see like players जिन्होंने competing market में अपने आप को grow किया, then you should look like Ryanair or Southwest in US. It's a pretty good airline. Yes. कुछ And famous अभी airline Southwest. हाँ, और अभी US में 2 बहुत major airlines हैं, major as in they were like 5th or 6th largest low fare airlines, but now they have both come together to make a single airline, or both together the new airline is like second largest now. That's how big they are. So one is Spirit, other शायद से Pinnacle है इंडिया में, मैं नाम भूल गया सेकंड का क्या था। So these two have come together. इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा है, for those who want to check, please बोल find दिया it on Google. Find it on my blog. Find it on my blog. तेरा blog है बे? या वो कंपनी के उस पे जाते हैं, और अच्छी। हाँ, अबे साले वो आगे उस पे भी जाते हैं, एविएशन जाते हैं? जर्नल्स वगैरह में, जो भी पब्लिशर्स होते हैं, जैसे there's a company called सिंपल फ्लाइंग, समथिंग लाइक दैट। जो भी मतलब एविएटर, एरो, इन सब में भी फिर जो ब्लॉग्स कुछ जाते हैं। मेरे 2 गए हैं, एक मैंने चाइना में कार्बन एमिशंस का किया था, और एक मैंने ये वाला किया था, स्पिरिट और ये फ्रंटियर एयरलाइन का, देख नाम याद आ गया, स्पिरिट एयरलाइन और फ्रंटियर। पेपर लिखा लड़के ने। हाँ, पेपर लिखा लड़के ने, याद नहीं आ रहा पेपर वैसे। अबे उसके नाम स्पिरिट, अब देख लो भाई, मतलब वो इतनी एकेडमिक बार पेपर लिखा क्या था ना, तो औकात है। वो रट गया था पढ़ के, स्पिरिट के साथ बोला तो मुंह में नाम आ गया। अलग अलग नहीं याद आ रहा। अच्छा हाँ, तो ये अपने चर्च में प्रेयर बोलने जैसा। You just remember the prayer. You don't exactly know the order or something. You just spurt it out. हाँ, ऐसे बीच में से कहीं से बोल दो, अरे हाँ, यार अरे वो तो भाई नहीं अब शुरू से करना पड़ेगा। होता। That's about it. ऐसा रट्टा मारा हुआ है थॉमस ने। रट्टा मारा है। आजकल, I mean, this also thing कि they change the prayer in some, few years into church business. The priests go and change the prayer कि भाई ये तो ऐसे बोलना नहीं है, ये बोलना है। And क्यों? मेरे को तो याद नहीं है, क्योंकि अब रटा नहीं है। और अबे क्यों का कोई जवाब नहीं होता यार, ये नहीं पूछते। See, there is no answer to that. अच्छा ठीक है, नो It is what it is.
So to answer your question, yes, airline prices, the ticket prices are going up and down. It's a very fluctuating market, man. But the factors जो main drive करते हैं, season of course. Also, I think तू कोचीन से डायरेक्ट fly कर रहा है. हाँ, obviously, So it is a moderately busy sector, okay? it So is a busy that also, sector no, I'll compared call to. it moderately busy. Busy is Delhi, Bombay, Delhi, Bangalore. These are busy sectors. Hey, हेलो सर, आप म्यूट पे हैं सर आप म्यूट पे हो गए हैं. Okay, वो अटक गया था. I don't know, man. हाँ. But you can't compare Delhi, Bangalore to Delhi, Kochi. भाई तो क्या That's what भाई पूरा that's what दो I'm full saying. on शहर है तो अबे that's what I'm average mid saying. level में हाँ. तभी मैंने बोला it's a moderately Yeah, busy. It's not a busy. वो busy yeah, है. true. वो busy है. True. So this makes a difference. So flights to a very, like, the less busier it gets, the sector, the higher the prices go. That also is like a very But general I'm trend. sure the people who listen to this, I'm sure they had their own experience with aircraft ticket experiences. Like, हम I'm सोचते sure, हैं man. 3 महीने पहले सोचते हैं कि भाई टिकट आज बुक हाँ, करनी है टिकट. तूने भी सोचा होगा, I'm sure हाँ, you still हाँ, do it. करा ही है. So yeah, that's हाँ रोज का है ये, रोज का रोज सोचते का हैं. है, रोज का है. But हाँ, this नहीं, is वो one तो है, thing वो that तो was है, happening. वो तो है. But It's now that a, I'm leaving Kochi, so हाँ, finally everything's sorted at my place. So हाँ. visited Fort Kochi, man. It's an amazing place, and if anyone happens to come to Kerala anytime soon, it's a must go to place. You know, Fort it's a Kochi. Fort Kochi. It's basically a very old town city, and पहली बात तो I got off the metro station in Ernakulam, and then I had to take a boat from boat jetty, but I did not get it. You Mm-hmm. because time duration बहुत ज़्यादा था and मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँच चुके थे. So I took a Mm-hmm. cab. The first thing I see is it's a naval academy. Indian Mm-hmm. Navy के ships खड़े हैं भयंकर, and that I fell in love with them. आते ही सारे Navy के ships, then cruises. Then I go, okay, cool, amazing. काफी And cool. yeah, drinking by the sides of beach. I think a lot of people, and especially the Indian beaches, because they are very the right temperature all the time. तो इन दैट Yes, सेंस काफी yes, बढ़िया था, काफी yes. सही सीन था. एंड हाँ, या नहीं, ये तो है यार. मतलब अपने अपने लाइक इंडियन बीचेस एक्चुअली, हाँ, हमारे इंडिया की जो बीच लाइन वार्म है, ओशन मैन, द वार्म ओशन द बीच. या एग्जैक्टली द लैटिट्यूड दे आर ऑन, वो ऑल हाँ सीजन बीच है एक तरह से. मतलब द हाँ वेदर इज हाँ ऑलवेज लाइक प्लीजिंग. ब्रो, that's why India has been a trading port all the time. You know, हाँ, Kerala especially. केरला We have स्पेशली. had the Arabs, we had the स्पाइसेस, Portuguese, हाँ सीरियन. spices, यस, yeah, यस, यस. Romans, even Romans. रोमन्स. हमें eighth class में पढ़ा था Roman gold coins we found it, right? So हाँ. there's a reason Indian oceans are the Indian Ocean. नहीं, वो तो है. आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ लाइक अ कोल्ड बीच का ना अजीब साउंड करता है सुनने में, हाँ, बट that तू सोच ही नहीं सकता, you know, you go हाँ, to a beach to, you know, get a sunbath or I mean हाँ, whatever, हाँ, and you suddenly एग्जैक्टली. have a cold beach. What the hell? हाँ, मेरे साथ यहाँ हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम एडिनबरा के बीच पे गया और पानी को हाथ मारा. मैं, भाई ये क्या, गंगा गंगा समान ठंडा है भाई, ये तो क्या है ये. और एंड दैट्स नॉट, आई थिंक बीच एडिनबरा पे जो बीच है, इट इज ऑन द नॉर्थ सी. तो मैन, Okay, इट्स ब्लडी कोल्ड यार. और मैं कहा, भाई ये तो yeah. गजब है यार. फिर एक बार मैं उसके बाद फिर से गया अराउंड 6-7 PM के आसपास. हाँ मतलब मेरे को आज तक इतनी ठंड नहीं लगी. वो हवाएं इतनी चलती है बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज. हाँ, और sea breezes, yes. ठंडी हवाएं -3 -4 पे, इफ यू आर गेटिंग विंड्स एट लाइक 50-55 किलोमीटर पर आवर, मैन इट्स बैड यार. Yeah, it's bad. But नहीं, cold beaches, I mean, they suck, man. They're only good during summer days, only if you have a bright, clear, sunny day. But else they're not. And those are hard to find. Those Those are days very are hard hard to to find. find. Those are like finding a needle in a dried grass like land. You know, it's that Haystack. hard to find. Haystack, Yes. haystack. Yeah, वो भी कर British सकते. साले. उस पे भी ढूंढ ले. मिलना तू तो नहीं ढूंढ है तू वो तू है तू ना. ढूंढ के दिखा दे. तू मेरे को ढूंढ के दिखा दे. सही उपयोग करने की बात है. And then Haystack. telling me about the sea breezes. बताओ भाई, भाड़ में बैठे हो तुम लोग, कैसे जा रहा है यूके का भाड़? भाड़ कुछ और होता है बे. भाड़ क्या होता है? भाड़ हाँ, नहीं, सॉरी, भाड़ नहीं, बाढ़ बाढ़ होता है. अच्छा. भाड़ हेल होता है. गो टू हेल, लाइक भाड़ में जा, वो वाला भाड़ होता है जो हम Oh, I कहते thought. हैं. Oh, जो तू really? कह रहा है That's a. वो जो तू कह रहा है वो बाढ़ होता है, जिसको हम फ्लड कहते हैं. अच्छा. तो No, उसका I
I really thought कि हम फ्लड जा रहे हैं. तेरे को सही में लगा, But मतलब someone's like नहीं, swearing, you I know what, never thought go to about it. flood, go to No, flood, I bro. never thought about it. मैंने कभी बोला ही नहीं है. I know हाँ. better cuss words to say. You know, नहीं, मैंने that's कभी also true. भाड़ में जा नहीं बोला किसी का मैंने. तो हाँ, नहीं तो फर्क वही वो भ और ब का है, बट एनीवे तो You got the हाँ, point. I got the point. Yes man, it has, मुझे पता नहीं, मतलब इन्होंने ना लिटरली हमारे को मेल जैसे आ गई ऑफिस से, TFL ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह हमें मेल कर रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलो, ये हो रहा है वो हो रहा है, और हमें लगा भाई पता नहीं क्या ही होने वाला है, और हम अपने घरों के अंदर बैठे. यस, आई एग्री, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है, सीन है, बट हमें मतलब जिस तरह वो 2-3 दिन पहले हमें डरा दिया गया, हमें मतलब जितना हम मतलब वी ओवर एस्टिमेटेड द स्टॉर्म. मतलब यूके में सब टॉयलेट पेपर के लिए भाग रहे होंगे. नहीं ऐसा Typical तो नहीं हुआ, European mentality. बट अबे बट यार. बट हैविंग सेड दैट, अगेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द सिटी, तो होता है वहां पे शायद हवा कम है, थोड़ा रूरल पार्ट्स में जाओ, थोड़ा आउट, थोड़ा कंट्री साइड पे जाओ, तो वहां हुई है डिस्ट्रक्शन, मतलब गजब लेवल की डिस्ट्रक्शन हुई है. Okay. तो आई मीन यस, इट हैज नॉट बीन दैट गुड, और 4 दिन चला लगभग, ऑलमोस्ट नहीं, 4 भी नहीं. फ्राइडे को आया, सैटरडे को उसने ब्रेक लिया, मतलब इट वाज लाइक अ ब्लडी टेस्ट मैच, मतलब फर्स्ट डे बैड, सेकंड डे टुक अ ब्रेक, लाइक रेन हो गई ना, तो मैच रेन अबैंडन. हो गया. हाँ, Quite फिर literally संडे वही रेन था. संडे मंडे अगेन इट वाज प्रीटी हार्श, बट फन था, फन था. मैंने बीच में ट्रैवल भी किया, लकीली आई मैनेज टू गेट अ ट्रेन आल्सो, क्योंकि ट्रेन्स कैंसिल हो रही थी, बट नो, इट वाज Okay. गुड, इट वाज गुड. और अभी फाइनली मतलब हमें स्काई दिख रहा है, पता नहीं मैं कितने दिनों के बाद एक ब्लू स्काई देख रहा हूँ. मतलब देख, मतलब दिल्ली में और लंदन में ना ब्लू स्काई ना दिखने की वजह भी कितनी डिफरेंट है, व्हाट आई थिंक. समटाइम्स दिल्ली में ब्लू स्काई नहीं दिखता क्योंकि पोल्यूशन है. Fair enough. यहाँ पे ब्लू स्काई क्यों नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई कुछ नहीं है, मतलब इट्स ऑलवेज ग्रे मैन, इट्स ऑलवेज क्लाउड्स, इट्स ऑलवेज रेनिंग, and it's, but anyway, I mean, I don't You want to know, I compare, mean, it's a stupid comparison. in Kerala, and the months that it rains, it हाँ, pours, and it's bad. it And you pours know, man, yes. you क्या feel क्या you कहते थे enjoy उसे, the rain. मैंगो शावर्स, वो तो अर्ली वाले होते हैं ना, Mango shower, अर्ली हाँ, रेन्स को वो early मैंगो वाले शावर्स होते हैं. कहते थे. Not, हाँ but other than that, also it rains pretty हाँ, bad. इट रेन्स, हाँ. But you enjoy the showers for a few days, but after that, यार क्या क्या यार, खत्म क्यों नहीं हो रही है? आई एग्री यार, You, मतलब आई एग्री, आई एग्री. it's not anymore टिप टिप बरसा पानी है. It's like अबे यार इट्स जान है इट्स यार, अबे यार खत्म बस करना करना यार. भाई. बाढ़ को बोल भाड़ में जा, मतलब हाँ. ये. Go to hell. तो नहीं, ये होता है, मतलब अब हम भी, मैं भी when दिल्ली से मूव, तो शुरू के लाइक पीपल, लाइक आई हैड माय फेलो यूरोपियन फ्रेंड्स, दे वर लाइक, ओ मैन द ब्रिटिश वेदर इज सो बैड एंड ऑल. मैं कहा, क्या बुरा है यार, बारिश हो रही है और क्या चाहिए, ठंड है. हाँ वहां मतलब. दिल्ली में 45 डिग्री से तो बहुत बेटर है. आई मीन दैट यूज्ड टू बी माय काउंटर आर्गुमेंट टू दैट. Okay. नाउ आफ्टर हाँ. 2.5 years आई एम लाइक, अरे हाँ यार, ये बहुत डिप्रेसिंग है यार मौसम, मतलब मन ही नहीं होता कुछ करने को, कुछ करने को मन नहीं होता. और हाँ, यू right. कांट हाँ. जस्टिफाई आल्सो, तुम लिटरली बस बैठे होते हो, यू आर जस्ट स्टेयरिंग योर लैपटॉप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, you're I mean you're that lazy that you're lazy to sleep also. तो समझ रहे हैं, मतलब आलस की अब तो समझ रहा है यहाँ पे. बट ठीक है, ठीक है. आई मीन अगेन कंपैरिजन नहीं करना, मैं थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है वो नहीं, कंपैरिजन. actually comparison में actually after a lot of conversation I still feel कि places in India are better to live, and you know, in terms I of would agree. luxury at least, I in would terms agree, of man. luxury at least, I I would could agree. live a crazy luxurious life at half of what you, not even half, earning half of Yeah. what you earn is actually Yeah. luxurious in India. Yeah. Even the ओए average ओए ओए, मेरी सैलरी मत बोल, चुप रह. चुप हो जा. कमाता है भैया, कमाता है भाई, ऐसा छोटा मोटा कमाता नहीं है. बस बस. मैं न्यू जॉब सेंट्रल लंदन, कहाँ है? तू क्या है, तू क्या है, क्या तू सीमा आंटी है क्या, मेरे लिए मैच मेकर ढूंढ रहे है. पागल, छोड़ दे. अबे कोई नहीं, मतलब अपने if some Seema auntie is watching our CSG, that means we are actually getting a We lot are of doing crowd. good. We So are doing good. yeah, सीमा we are आंटी doing प्लीज गेट अस, सीमा आंटी good. गेट अस Yeah. व्यूज, नहीं बट ओके. Yeah, yes. सही So that is सही. it. Oh man. No, but it's been great यार, it's been great. तेरे को मैंने बताया लास्ट वीकेंड हम लोग कसिनो खेलने गए. एक्चुअली कसिनो Okay. खेलने नहीं, कसिनो गए.
Casino और guy. हाँ, so I mean we So were what looking kind for. of games are there actually? I mean, you played the typical So there card was, games or I saw there was poker, there was roulette, there was वो क्या होता है यार, वो एक रोले ही होता blackjack? है, वो रोले का ही होता है. ब्लैक जैक वाज ऑब्वियसली I'm देयर, sure यस. blackjack. स्लॉट मशीन्स वर देयर. और Okay, what is the goal behind a slot machine? I have never understood it. आई डोंट मतलब नो मैन, मेरे भाई को नहीं समझ आया कुछ तो कौन वो. कौन पैसे डालेगा, क्योंकि वो तो यार बस मैथमेटिकली it's मैंने जितना समझा है वो गेम, मैथमेटिकली इट इज यू लूजिंग मोर. आई मीन yes, मतलब तुम्हारे why would फेवर में you do ऑड्स it? कम है. हाँ, क्योंकि शायद उनको दिखता होगा कि यार अगर जीत गया तो पैसा 10 हाँ, गुना मिलेगा, तो ये मतलब लॉटरी का सीन लॉटरी. है. बट वो अगर बहुत बड़ा अगर है, मतलब लाइक फॉन्ट साइज 72, बोल्ड, अंडरलाइन, एवरीथिंग, बट बहुत बड़ा अगर है नहीं, वो. I'll tell you actually, मैं यहाँ पास में दुकान में गया था, एंड केरला के ये सीन है कि लॉटरी बिजनेस बहुत चलता है, हाँ, एंड it's actually it's actually pretty sad to say it, but it's one of the most needed thing in Kerala because वहाँ से पैसा आता है और हाँ. लोग लॉटरी खरीदते हैं हजारों के हिसाब से. हम्म. And I was standing there, and there was a lottery guy who stood next to me, who was standing next to me, हाँ. and I didn't want to buy a ticket, so मैंने उससे बात नहीं किया. He was trying to have a conversation with me, but मेरे हाँ. को मैं फोन में देख रहा था, and the shopkeeper had to give me some change राइट. after whatever transaction, and I put my hand in front, और चेंज की जगह उसने मेरे हाथ में लॉटरी टिकट पकड़ा लॉटरी दिया. टिकट दे दिया. और मैं वापस तो दे नहीं सकता. हाँ. So okay, cool. It's 40 rupees. I'll pay it off. I mean, it's हाँ. okay, cool. एक lottery ticket दिया, and he seems to be not doing that great for himself. हाँ. खरीद लिया, and we got the money. And the next day, हमारा घर पूरा उस लॉटरी के लिए वेट किया. अगर लग गया तो, अगर लग गया तो, सीरियसली मतलब हाँ. भले ही मजाक में मिली वो टिकट, बट सब हो गए हाँ, सीरियस कि भाई अगर हो हो गया गया तो. मतलब, हो गया तो. We actually checked the newspaper, नहीं हुआ, 1,000 रुपए भी नहीं मिले. ओ यार. I get the mentality, but on a larger हाँ. scale, when you're spending 40 rupees, you get to do that. I mean, you get to be या excited about, you know, या taking that chance. But when you दैट्स go to ट्रू मैन. casino, I don't think that's a good option. So no, we went to the casino. We were three of us together. और बाकी जो दो थे उनको of course उनको slot machine आता था, I think so. But मतलब they weren't well versed with all other games. ठीक है, मुझे भी personally सिर्फ black jack आता था. मेरे को इतना मेरे को बाकी बेसिक किसी. से आता है, मैन. हाँ, हाँ. मैं ब्लैक जैक मतलब फोन पे बहुत खेला हूँ और वैसे भी खेला हूँ एक दो बार, मतलब दोस्तों के साथ. मेरे को ब्लैक Okay. जैक जेन्युइनली पसंद है गेम, मतलब कूल है गेम. एनीवे, तो Okay. Cool. हम एंटर करे. पहले तो मतलब अच्छा मस्त प्रोसेस, पूरा फोटो खींची, पता नहीं 4 लोगों ने तो फोटो खींची. बीआरपी हमारा जो हमारा बायोमेट्रिक रेजिडेंस प्रूफ होता है यहाँ का, एनी फोटो ओहो, आईडी, दैट बकरा थिंग बनाने गॉट से पहले मतलब यूआईडी कराया तुम्हारा. दैट थिंग गॉट स्कैन्ड एंड ऑल मैन. मतलब पूरा वो स्क्रीन पे दिखा रहा है, हाँ आपका चेहरा स्कैन हो गया, अब आप जा सकते हैं, यू नो. अच्छा. हाँ. और luckily this casino didn't require us to wear suits and all. जैसे सिंगापुर में I know Sentosa Island पे वहाँ पे जैसे casinos हैं, वहाँ पे you have to be well dressed to be able to even enter the casino, getting it. यहाँ पे ऐसा Okay. सीन नहीं था, हम बिंदास घुसे हैं जीन्स और स्नीकर्स में, कोई दिक्कत नहीं है. खैर, Okay. तो अंदर घुसे, देखा, थोड़ा घूमा फेरा और देखा कि क्या सिस्टम है, हाउ टू गेट द टोकन्स टू बी एबल टू स्टार्ट गैम्बलिंग, शुड आई से. ठीक है, तो Gambling is what you have to say. हाँ, it is gambling, yes. तो वहाँ पे the thing was you take out, you have to give the dealer cash and that the dealer will give you the tokens. सीधे डीलर ही देगा टेबल पे, कहीं और से नहीं करवाना कुछ भी. ठीक है. Okay. अच्छा, अब कैश हम कैरी नहीं करते, तो वहां अंदर एक मशीन है, एटीएम मशीन, जिसपे लाइक एनीथिंग यू विथड्रॉ यू हैव टू पे 2.75 पाउंड्स एक्स्ट्रा ऑन टू दैट. और मतलब ये चुभता है पैसा कि मतलब you're getting 20, supposing you are extracting 20 pounds, so you'll be charged about 22.875, something like that. ठीक है. तो हमारे को वो 2-2.5-3 पाउंड हमें चुभ रहा था कि यार क्या 3 पाउंड चला गया. 3 पाउंड मतलब बस में रिटर्न ट्रिप हो गया टाइप, घर से कसिनो का. गेटिंग इट. खैर, एनीवे, Okay. तो हमने कहा चलो ठीक है, दे देंगे. 20 पाउंड का करारा नोट, एकदम मस्त करारा नोट लेके मैंने कहा ठीक है, मैं 20 पाउंड पे ही खेलूंगा, मतलब 20 पाउंड से आई स्टार्ट. उस पे है कि मिनिमम बेट इज 10 पाउंड्स. तो मेरे पास आई मैनेज टू गेट लाइक 4 टोकन्स ऑफ 5 फॉर 20 पाउंड्स. और मैंने But रख even लिया then, minimum मिनिमम bet is 10 10. pound, तो right? मतलब हाँ, सो मतलब 10 आई कैन कीप इन माय हैंड एंड आई हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विद Right. एटलीस्ट Okay. 10. गेटिंग इट. Okay. Cool. तो मैंने शुरू कर दिया और पहली गेम तो मैं हारा.
तो ठीक है, What did फिर you play? मैंने ब्लैक जैक ओनली, आई वाज ऑन द ब्लैक Okay, जैक cool, टेबल, cool. ठीक है। दूसरा बाकी 2 टोकन डाले तो मैं जीता, ठीक है। अब मैंने फिर वापस 10 ही डाले, 10 अब मेरे पास आ गए हैं प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो नहीं अभी, मैं मतलब बैलेंस आउट हो गया हूँ। Zero, zero, हाँ, zero. तो इस टेबल पे ना कुछ देवर 2-3 एक्स्ट्रा थिंग्स, लाइक एक्स्ट्रा बेटिंग वेज, और मैंने यहाँ पे मैं बोलूंगा जेन्युइनली, यहाँ पे मैंने तुक्के से एक जगह ऐसा रख दिया कि इवन इन ब्लैक जैक दे वर सीइंग कि कौन सा सिंबल आपके पास आ रहा है। ऐसा कुछ टेबल्स पे होता है, कुछों पे नहीं होता। बाई चांस इस वाले पे था, और बाई चांस मैंने उसी जगह अपना कॉइन रखा, अपना टोकन रखा, कि डीलर को लगा कि मैं उस चीज पे भी बेट कर रहा हूँ कि मेरा डायमंड आएगा कार्ड्स में, ठीक है। गेटिंग Okay, इट? ठीक है, एक्चुअली cool है. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर ये एक हम्म. एडिशनल ऑप्शन होता है, गेटिंग इट। Okay, ये और डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव ये मार्केट है. डेरिवेटिव है, हाँ। और मैंने गलती से उस पर डाला, और मैंने 10 डाला, नेक्स्ट थिंग आई नो मेरे को 70 दे रहा है वापस, और मैं व्हाट द फक यार, 70 क्यों मिला मेरे को? हाँ, क्यों 70 मिला? तो मतलब you betted on कुछ something नहीं। which सो is द easier to predict, right? सो द थिंग वाज एट दैट गेम आई आल्सो हैड अ ब्लैक जैक, एंड आई आल्सो गॉट दिस थिंग एडिशनल टू द ब्लैक जैक। तो मेरे को ब्लैक जैक का वैसे ही 1.5 Okay, 2.5 टाइम्स मिलता है, और इस चीज का एडिशनल उसका और मिला। तो नेक्स्ट थिंग okay, आई नो मेरे cool, को cool. 70 पाउंड उन्होंने एक्स्ट्रा, मैं ये क्या है। एंड आई एक्चुअली मैंने अपने नेबर वाले बंदे से पूछा, मैं कहा ये मुझे लोन तो नहीं दे रहा कि मेरे पास टोकन नहीं है, क्यों दे रहा है मेरे Yeah, yeah, को? you're always doubtful when you're in a gambling shop. हाँ, ये क्यों दे रहे थे मुझे इतना अच्छा पैसे? गेम तो मैंने खेला नहीं है। और मैं आई वाज वेरी वेरी दिस थिंग कि ठीक है, अब 70 आ गया ना, ये 70 तो पॉकेट में गया, अभी मैं 10 से ही खेलूंगा कि मेरे को अब प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट के साथ ही निकलूंगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन See, अ लॉस। see, that is actually the smartest thing to do. हाँ, You don't go in all in again, नो you यू know. डोंट मैन, यू डोंट Yeah. हैव टू। Or you can if you can, but that's not a it's Chindi it's a philosophy. yeah, Yeah, risk versus yeah, return wala हाँ, graph and all, right? हाँ, right. Fine. नेक्स्ट थिंग आई नो, मैं जीता, मैं अगला गेम हारा, ठीक है। सो 1 2 3 गेम्स आई प्लेड, सेकंड गेम आई वन लाइक दिस मच, एंड एनीवे, एंड उसके बाद मैं करते करते आई मैनेज टू गेट अबाउट, आई मैनेज टू, आई थिंक आई 6 7 गेम्स ओनली आई प्लेड, 6 7 गेम्स ब्लैक जैक लिटरली 3 मिनट में खत्म हो जाती है। एक एक गेम हाँ, 10 20 सेकंड की होती है ब्लैक जैक की, इतनी जल्दी जल्दी खत्म होता है ब्लैक जैक, ठीक है। okay. और मैं 160 पाउंड जीत गया यार, 20 डाले थे मैंने, और 140 प्रॉफिट। अरे और मैं वापस आके सोचा यार 140 पाउंड प्रॉफिट, एक तरह से मैं सोचूं टेक्निकली मैंने एक अपनी दिन की सैलरी, टेक्निकली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिन की सैलरी बना देख ली। तो technically see नहीं that is where you're wrong. In a 30 period of time the house wins. तो अगर हर दिन हाँ, जाएगा तो हाँ, वो तो है, वो तो है। तो नहीं, मतलब आई जस्ट लाइक ब्रैगिंग अबाउट इट, बट तो yeah बट मैं 140 पाउंड नॉट बैड मैन, 20 डाला था मैंने तो। yeah yeah एंड फिर मैंने उसको जब एनकैश कराया, तो ऐसे करारे करारे नोट, एंड यू नो इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ कैसीनो दे कांट बी फेक, द नोट्स आर रियल। और fair enough. आई मीन इट वाज मस्त एक्सपीरियंस था। मेरे साथ बाकी 2 लोग थे, हम लोग बाहर निकल के फिर सोचे यार अब घर उबर में चले कि बस में चले। डेथ 140 पाउंड आया Oh ब्रो। तो मजाक तो नहीं है। आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट डूड हम लोग गए ही जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ थे। हम नहीं man 20 that's पाउंड, it's always in percentages right. तूने हाँ, कितना 700% में निकाला है तो 700% कमाया, सिंपल हाँ सिंपल, सीरियसली 700% इज अ वेरी गुड अमाउंट मैन। हाँ और ये तो महीना थोड़ा टाइट चला था, लिटरली वो कसिनो की जीत पे मेरा ये महीना निकल रहा है। ये हालत है ये यार मतलब उस दिन मैं लिटरली दोस्तों से बात कर रहा यार, महीना टाइट चल रहा है, कसिनो चले। okay come on जोक 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 है, जोक है, जोक है भाई, ऐसी ऐसे ही आदत लगती है। इफ वी स्टार्ट गोइंग टू हाँ दीज no प्लेसेस no but ड्यूरिंग there दीज is this टाइम्स one. ओनली। हाँ बोल। Yeah, there is this one business which is famously they were going bankrupt and they had some X amount of money on them and हाँ, they were like okay we'll bet it on blackjack or something. हाँ, Something they went and did gambling with them and they got what 7x or 8x whatever and then they restarted their company because now they're not bankrupt anymore. It's a company fee and so I mean, I know people talk about counting cards and everything. I think that is one topic जो हम लोग कभी बाद में discuss कर सकते हैं, because I don't want to start talking about it and make this podcast long. But in blackjack particularly, there is a mathematical aspect to it, unlike slot yeah machine or true roulette table true for that matter.
Hangover, man. That's why Hangover. Haven't you seen the movie? a Hangover or 21 for that matter, these 21. are very good movies. Yeah. And Blackjack फिर थोड़ा crackable है, तभी मैं वो हाँ. gamble word use करने में Even थोड़ा poker is crackable. poker I don't know, poker मेरे को बिल्कुल idea ही नहीं है, zero, but मेरे को भी ज्यादा कुछ है नहीं. हाँ But that is something that I want to learn. Definitely. हाँ, but no man, great experience. और again I was saying something कि it is very important. हम usually ना वो tough situation में ही if you start going to these places ना, तभी उन चीजों की addiction होती है actually. मैं सोच रहा था तभी लत लगती है. और क्योंकि वही है ना now, क्योंकि उस सिचुएशन में रहोगे तो तुम डिपेंडेंट जा रहे हो उस जगह पे. But you're not doing it because you needed money. I mean, okay, you needed some money to get over that place, but okay, in your case that was different. हाँ, that's what I'm saying. That's what I'm saying. मैं वही कह रहा था ना कि हम लोग हफ्ता बाद ऐसे बात कर रहे थे, थोड़ा फाइनेंशियल टाइट चल रहा था, तो ऐसे ही जोक मारा कि भाई पैसे नहीं है, चल कसिनो चलते हैं. मैं वही कह रहा हूँ, ये सिचुएशन में कसिनो जाना फिर गलत हो जाता है, क्योंकि okay, maybe. क्योंकि फिर कसिनो तुम्हारा नीड बन जाता है टू अर्न मनी, गेटिंग इट. अब वो नीड बन गया, मतलब लत लग गई, मतलब गए अब. नाउ यू आर पार्ट ऑफ द गेम. बट And you so it's also like there's a small percentage of people who actually win at casino. So yeah, definitely. So definitely. it's just a high barrier industry. मेरे को लग रहा है वो डीलर मेरे पे हंस रहा होगा. मेरे को तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है. क्यों हंस रहा होगा? डीलर मेरे पे हंस रहा होगा, यार ये आया चोमू 3 मिनट खेल के चला गया और 20 पाउंड की बेट लगाई. मेरे लिटरली जो मेरे आसपास टेबल पे लोग बैठे हुए थे, वो एनवेलप भर के लाए हुए थे 50-50 पाउंड के नोट्स की गड्डी बना के. अबे प्रॉब्ली तेरे को बस दे रहा होगा पैसे, क्योंकि ही सॉ कि ओके साले मैं जीत रहा था, चुप कर साले. बच्चे को दे देते हैं एंड he'll come back जीत रहा था, मुझे पता है. इतना मुझे पता है, इतना भी मैं फुद्दू प्लेयर नहीं हूँ, खेलना आता है, इतना पता है. जब मैं जीत रहा हूँ, अबे जब मैंने बॉल डाली बंदा आउट हुआ तो मुझे दिख रहा है ना विकेट पे लगी, अंपायर फालतू तो इतना आता है मेरे को खेलना. कच्ची मिट्टी, इसकी कच्ची मिट्टी है, $20 का है. But talking about this, अभी इंडिया में भी I don't know the legality status of it, but चल रहा है. Fantasy 11, all these. Yes, Dream 11. Dream 11, sorry, Fantasy League और Dream 11 and और इसमें बहुत एक Dream 11 is a unicorn now. Yes, it is. Yeah. इनकी भी बिजनेस केस स्टडीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ा था. I think someone who works in the industry would actually be able to explain it to us better. I agree. मैं तभी ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा कि फालतू कुछ ना बोल दूं, अपना ही मजाक बन जाए, like gibberish coming out, but yeah, that's true. Anyway, been a good episode, man. I mean, I think we had a lot to share during this one, and yeah, I think that's true. The graffiti did make sense, and finally. So everyone, do listen to this one and do share your thoughts about our new episode, and stay tuned. Stay tuned. Please write us what you would like to listen, and if you have any casino experience, please tell us. Please let us know about it, and feel free to write to us for any suggestions, any complaints. Hopefully not, and anything. We'll be really happy. Anything. लिखो हमें यार, लिखो, बहुत अकेले इंसान है हम, कुछ भी लिखो हमें. ऐसे बस ऐसे लिख दो, बेस्ट विशेस काफी है. बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया. चलो रैप अप करते हैं, ठीक है? Awesome, great stuff. Thank you guys.